Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing well. So today we are going to discuss some questions from exercise 2.2. Okay. So this exercise is based on the property of inverse trigonometric function. So let's start without wasting the time. So the very first question is written in the board, which is 3 times sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube, where the domain of x is from minus 1 by 2 to 1 by 2 close interval. So we have to prove this question. So we will take the right hand side of this part, okay, right hand side, which is given as sin inverse 3x minus 4x cube. Okay, as I told you earlier that if you have to learn inverse trigonometric function, then we have to learn all the formulas and algorithm of trigonometric function, which I have taught you in 11th standard. So basically there are some formula of inverse trigonometric function, and the very first formula is sin 3x. Okay, what is the formula for sin 3x? 3 sin x minus 4 sin cube x. Similarly, the formula of cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. The formula of sin 2x, there are two formula for it. The very first 2 times sin x cos x, okay, and second formula in terms of tan is twice tan x upon 1 plus tan square x. Okay, now the formula of cos 2x. So dear student, there are 4 formulae for cos 2x in different terms, in terms of sin, in terms of cos, in terms of tan. So the very first formula, which is in terms of cos, is twice cos square x minus 1, and the second formula, which is in terms of sin, is 1 minus 2 times sin square x. The third formula of cos 2x, which is both in cos and sin, ठीक है, cos and sin के terms में है. So cos square x minus sin square x, and the last formula, which is in format of tan, is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Okay, so we have to learn all these formula if we have to solve the question of inverse trigonometric function. Now you can clearly see here, if we are putting here x is equal to sin theta, okay, instead of x, if we replace it by sin theta, then you can check here what we get from here. Sin inverse 3 times sin theta minus 4 sin cube theta. Okay, so what is the formula of it? 3 sin theta minus 4 sin theta. Now you can check from here, 3 sin x minus 4 sin cube x is the formula for sin 3x. In similar manner, 3 sin theta minus 4 sin cube theta is the formula for sin 3 theta. Okay, sin 3 theta. So sin inverse sin 3 theta. Now since we know that there is a formula in inverse trigonometric function, sin inverse sin theta will be equal to theta if and only if theta belongs in the range of sin inverse, and the range of sin inverse is closed interval minus 1 to 1. Okay, what is the range of sin, sorry, minus pi by 2 to pi by 2. The range is from minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so if the theta existing within this range, then sin inverse sin theta must be equal to theta. So how will we find that this angle theta is whether existing within the range or not? कैसे पता करेंगे? So there is a domain, ठीक है, there is a condition already has given in the question that x is belonging between close interval minus 1 by 2 to 1 by 2. So इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. Now see student, since x is belonging to closed interval minus 1 by 2 to 1 by 2, so we can write it minus 1 by 2 greater than equal to x less than equal to 1 by 2. Now substitute the value of x here. What is x? हमने x को क्या लेट किया था? We replace x by sin theta. So we have to put here sin theta instead of x. Now see this inequality. This is given in the form of sin theta. Here is minus 1 by 2 and here is 1 by 2. So we have to make this a uniform pattern. It means that we have to arrange all these in terms, है ना, जो इंड लिमिट है इनको भी हमें एंगल्स के फॉर्म में, साइन के फॉर्मेट में लाना होगा.
So tell me what is the value of which angle gives you minus 1 by 2? In the table of sine, which angle gives you minus 1 by 2? Sine minus pi by 6. Sine minus pi by 6 gives you minus 1 by 2. Sine theta 1 by 2 is the value of sine pi by 6. Okay, now operating sine inverse. So this will be sine inverse sine minus pi by 6. This will be sine inverse sine theta, and this will be sine inverse sine pi by 6. Now we know that sine inverse sine theta equal to theta if the angle is existing within the range of sine inverse. Now see, minus pi by 6 existing within the range which is minus pi by 2 to pi by 2, इसके बीच में ही आ रहा है ये. So this will gives you minus pi by 6. Sine inverse sine theta equal to theta. Sine inverse sine pi by 6. Again check, pi by 6 is lying within the range which has been given as minus pi by 2 to pi by 2. इसके अंदर ही लाई करेगा कहीं pi by 6. So इसकी वैल्यू भी आ जाएगी बेटा pi by 6. Now we have to consider about 3 theta, है ना, हमें 3 theta की रेंज फाइंड करनी है. So multiplying all the inequality by 3, minus pi by 6 multiply 3 into theta, 3 into pi by 6. Okay, so 3 2 ja 6, 3 2 ja 6. So the range we got from here is minus pi by 2, 3 theta, pi by 2. Okay, so you can check here your angle 3 theta, है ना, 3 theta is existing within the required range which is from minus pi by 2 to pi by 2. और बेटा ये रेंज किसकी है? This is the range of sin inverse. So we can write it like sin inverse sin theta is equal to theta, which is theta is given as 3 theta here. Now see, if x is equal to sin theta, then the value of theta will be sin inverse x, है ना. कैसे पता किया? ऑपरेट कर लो दोनों ओर sin inverse. जैसे ऑपरेट करोगे तो इधर हो जाएगा क्या, sin inverse x is equal to sin inverse sin theta, है ना. So sin inverse x is equal to theta, है ना. So we can replace the value of theta here. So we get theta 3 times sin inverse x, which is your required left hand side. So pause the video and take the screenshot of it. Okay, now the next question number 2. Question number 2 you will do by your own. I am talking about question number 3rd. Tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 equal to tan inverse 1 by 2. Okay dear students, so we have to prove it. See here, there is a formula for tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Okay, this is the formula and I already proved it in my last video. If you have not seen that, then go through the video and watch the video completely. So this is the formula which we are going to apply here. So tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 will be tan inverse, instead of x the angle has been given as 2 upon 11, and instead of y the angle is given as 7 upon 24. So now put it in the formula. So tan inverse x plus y, so x is given as 2 upon 11 plus y is given as 7 upon 24 upon 1 minus x, it means 2 upon 11 into y, that is 7 upon 24. Tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. Okay, now see tan inverse, now taking the LCM, ठीक है, tan inverse 2 upon 11 plus 7 upon 24 is equal to tan inverse 1 by 2, ठीक है. Now see 2 upon 11 plus 7 upon 24, so we have to take the LCM of 24 and 11. So क्या आ जाएगा बेटा, 11 into 24. Okay, now here 2 multiply with 24 plus 24 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ LCM आ जाएगा 11, तो 7 into 11. ओके, डिवाइडेड बाय 11 into 24 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना. एक्चुअली थोड़ा सा हम कर सकते हैं यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल, है ना, 12 टाइम. सो दिस विल बी 1 minus 7 upon 11 into 12. ओके,
डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा. सो दिस विल बी tan इनवर्स 24 2 जा 48 प्लस 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 77 डिवाइड बाय 11 इंटू 24 ऐसे रखो इसको अपॉन. सो 11 इंटू 12 मल्टीप्लाई विथ 1 यानी 11 इंटू 12 माइनस 7 अपॉन 11 इंटू 12. ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, नथिंग एल्स. सो 48 प्लस 77 7 2 जा 14 प्लस 1 15 5 1 कैरी 7 प्लस 4 11 1 12 125 डिवाइड बाय 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लाई देन द फ्रैक्शन विल बी इंटरचेंज. सो ये ऊपर चला जाएगा 11 इंटू 12. ओके, नीचे आ जाएगा आपका 11 इंटू 12 माइनस 7 11 इंटू 12 माइनस 7. सो कितना हो जाएगा बेटा ये 12 1 जा 12 2 1 कैरी 12 1 जा 12 प्लस 1 13. ठीक है, माइनस 7. सो 132 माइनस 7 यानी कि कितना आ जाएगा ये 125 है ना. 125 125 कैंसिल आउट 11 11 कैंसिल आउट 12 1 जा 12 12 2 जा 24 दैट इज tan inverse 1/2 which is our required right hand side. So pause the video and take the screenshot of it. Okay, now the next question number 4. See question number 4. Question number 4 is 2 times tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31 upon 17. Okay, now see, we have to prove that twice tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 is equal to tan inverse 31. You have two options. You have two options to solve it, whether you can shift this amount towards right hand side and then you can operate tan inverse x minus tan inverse y, and the second choice left is put the value of 2 tan inverse x here. There is a formula for twice tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. So this is the formula of 2 tan inverse x in terms of tan inverse. I have already teach you regarding this all these formulas, ठीक है, in my last video. So kindly go through the video and watch the video completely. So actually there are some formulae of 2i's tan inverse x. The very first formula in terms of sine is sine inverse 2x upon 1 minus x square. Another formula in terms of cos is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and the third formula in term of tan inverse is tan inverse 2x upon 1 minus x square. So here we will apply the formula in terms of tan because we have the another term is also in tan inverse. ठीक है, तो हम इसको tan inverse के formula से break करेंगे. So what will we get from here? Here the angle x is 1/2. So apply this formula, we get tan inverse twice x. What is x? X is 1/2 upon 1 minus x square means 1/2 square. Okay, so we have applied this formula here. ठीक है, tan inverse 2x upon 1 minus x square. Now plus tan inverse 1/7. Okay, now see, we have taken left hand side beta. So this will be tan inverse 2 and 2 will be cancelled out. So in numerator we get 1 upon 1 minus 1/2 whole square, that is 1/4. Okay, plus tan inverse 1/7. Now see, tan inverse 1 upon 4 1 ja 4 minus 1, that is 3/4. Okay, plus tan inverse 1/7. So this will be tan inverse 4/3 है ना, 4/3 plus tan inverse 1/7. Okay, now you can apply the formula of tan inverse x plus tan inverse y. So on applying the formula it will become tan inverse x plus y, that is 4/3 plus 1/7 x plus y upon 1 minus xy, 1 minus x which is 4/3 into y which is 1/7. So what will we get from here? Tan inverse
Now the calculation is there. Take the LCM of 3 and 7, which is 21. So 3 7 ja 21, 7 4 ja 28, plus 7 3 ja 21, 3 1 ja 3, divide by 7 3 ja 21, 21 1 ja 21, minus 4 1 ja 4, divide by 21. So 21 cancel out. This will be tan inverse 28 plus 3 31 अपॉन 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 17. तो tan inverse 31 upon 17 which is our right hand side. Okay, so pause the video and take the screenshot. Okay, so now next question number 5, write the following function in the simplest form. So basically by the meaning of simplest form we have to change the given inverse trigonometric function in terms of their argument. ठीक है, ये जो भी trigonometric function inverse trigonometric function हमें दिए हुए हैं. Suppose question number 5, tan inverse root 1 minus x square minus 1 upon x, where x does not equal to 0. What we have to do here, we have to solve it till we get एन आर्गूमेंट्स मीन्स मतलब थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे. थीटा मीन्स यहाँ पे थीटा की जगह पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है. तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे एक्स की जगह रिप्लेस करना है कि जो tan इनवर्स है ये एलिमिनेट हो जाए. आई एम टेलिंग यू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सी हियर. tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. What is the condition? X should not be equal to 0, because if x will be equal to 0 then this will be turned into an indefinite format. So now this is the trick of inverse trigonometric function beta. If you have whatever the inverse trigonometric function we have outside the bracket, we have to make the internal one in the same format. अगर बाहर से inverse है tan inverse तो अंदर हमें tan का फॉर्म बनाना होगा. If you have cos inverse outside the bracket, so we have to make the internal one in terms of cos. If you have sin inverse outside the box, we have to change the inner part, ठीक है, in terms of sin. If you have sec inverse outside the bracket, we have to change the inner part in sec. So whatever the format we have given, ठीक है, जो भी आपको जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको इन्वर्स दिया होगा बाहर से, आपको अंदर x की जगह या थीटा की जगह जो भी वेरिएबल में आपको दिया हुआ है, जो भी कंडीशन दी है उसमें x को आप रिप्लेस करके जो भी अंदर है उसको आप उसी फॉर्मेट में उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में चेंज करना है ना. जैसे बाहर से अगर tan इनवर्स है तो अंदर आपको tan का फॉर्म बनाना पड़ेगा. बाहर अगर sin इनवर्स है तो अंदर आपको sin का फॉर्म बनाना पड़ेगा. इफ़ यू हैव cos इनवर्स आउटसाइड द ब्रैकेट, सो वी हैव टू मेक cos. ठीक है, इफ़ यू हैव sec इनवर्स आउटसाइड द ब्रैकेट, सो वी हैव टू मेक इंटर पार्ट इन टर्म्स ऑफ sec. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वी नो दैट देर आर सम फार्मूले. sin inverse sin theta, I already told you, will be equal to theta for all value of theta belongs to in the range of sin inverse, which is from minus pi by 2 to pi by 2. Okay, this is the very first. Second, cos inverse cos theta. Cos inverse cos theta is equal to theta for all value of theta belongs to the range of cos inverse and which is from 0 to pi. Similar case, tan inverse tan theta equal to theta for all value of theta belongs to r. ठीक है, क्योंकि इसका रेंज क्या होती है, r होती है. ठीक है, r माइनस 1 to 1. ठीक है ना, ये होती रेंज, सॉरी. एंड सिमिलर केस sec इनवर्स sec theta will be equal to theta for all value of theta belongs to in the range of sec inverse and which is r. तो इस तरीके से आपके पास सबकी रेंज होनी चाहिए. सॉरी यहाँ पे ये रेंज जो है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको लर्न होने चाहिए सारे. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. इसके बाद फिफ्थ है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू. यहाँ पे सेक इनवर्स की रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक इनवर्स? द रेंज ऑफ सेक इनवर्स मीन्स द डोमेन ऑफ सेक, एंड द डोमेन ऑफ सेक विल बी 0 to pi minus pi by 2. ठीक है, आई होप आई एम राइटिंग हेयर. और इसका क्या होगा, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2
माइनस 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी बाहर से जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए आपका थीटा एंगल, ठीक है। सो नाउ चेक हियर, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x बाय एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो दैट वी विल मेक द इंटरनल पार्ट इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। सो व्हाट शुड वी हैव टू पुट हियर, हमें क्या रखना चाहिए x जगह पे, sec थीटा, रिप्लेस x विद sec थीटा, सो 1 प्लस sec स्क्वायर, सॉरी tan थीटा रखें क्या, x इज इक्वल टू tan थीटा, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यस। लेट्स सी डज इट वर्क्स और नॉट। सो रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, so this will be tan inverse 1 plus tan square theta, that is sec square theta, and taking it from outside the root it will gives you sec theta minus 1 upon tan theta, okay. So tan inverse, now change the sec in terms of cos, so this will be 1 upon cos theta minus 1, and also break tan theta in terms of sin and cos, so this will be sin theta upon cos theta. So this will be tan inverse 1 minus cos theta, 1 minus cos theta upon cos theta divided by sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta. This will be cancel out. So we get from here tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta. Now apply the formula of cos and sin here. So 1 minus the formula of cos theta to eliminate 1, so we will use here the formula of cos in terms of sin, which is 1 minus 2 times sin square theta by 2, okay, and in denominator break sin theta, twice sin theta by 2 into cos theta by 2, ठीक है। So tan inverse, now see 1 and minus 1 cancel out, so we get from here in numerator we get twice sin square theta by 2, twice sin square theta by 2 divide by twice sin theta by 2 cos theta by 2. Now see 2 and 2 cancel out, 1 power of sin theta by 2 cancel out, so we get from here tan inverse sin theta by 2 upon cos theta by 2, that is tan theta by 2, tan theta by 2. So tan inverse tan theta by 2 will be equal to theta by 2 because theta by 2 is existing within the range of tan inverse, ठीक है। tan inverse की रेंज क्या है भाई, tan inverse की रेंज है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। सो हम लेके चलेंगे कि थीटा बाई 2 जो भी है वो इसकी रेंज में लाई कर रहा है। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इफ x इज इक्वल टू tan थीटा देन थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x, okay. So here 1 by 2 time the value of theta is tan inverse x, so the simplest form will be 1 upon 2 time tan inverse x, okay. I hope you are getting all these questions, but you have to learn all these formulae, ठीक है। ये formulae दिमाग में आपके होने चाहिए if you are solving such kind of questions, okay. Pause the video and take the screenshot. So the next question number 6. The question number 6 is tan inverse 1 upon root x square minus 1, and where mod x is greater than 1. What does it mean, mod x is greater than 1? It means that the value of x is existing between minus 1 to 1, between minus 1 to 1, okay. ये इसकी वैल्यू है। Now see again you have to think about that, what will be the replacement of x, what will be the replacement of x, so that we get the internal part in terms of a tan, ठीक है। tan के फॉर्मेट में कैसे चेंज हो, so ऐसा करने के लिए we can we put it sec थीटा, अगर मैं यहाँ रखूँ, हाँ, cos x 1 plus cot स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा, so let put x is equal to cosec theta. Can we put x in terms of cosec theta, so that we get from here tan inverse 1 upon root cosec square theta
-1. Now see, there is a formula in 10th standard which is known as trigonometric identities. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and from here we easily get cot square theta equal to cosec square theta minus 1. Okay, so this is the identity from 10th standard, है ना, you must know it. So this will turn into tan inverse 1 upon, now see, cosec square theta minus 1 equals cot square theta, and cot square theta if you take it outside the root के बाहर लेंगे तो we get from here cot theta. Okay, we get from here cot theta. Now see, 1 upon cot theta is equal to tan theta, so this will be tan inverse tan theta. Okay, so tan inverse tan theta will be equal to theta because we suppose that the theta is existing within the range. So now substitute the value of theta. If x is equal to cosec theta, this will imply theta is equal to cosec inverse x. Theta will be cosec inverse x. We get it from here. So replace theta with cosec inverse x. So the final answer will be cosec inverse x. Okay, you can also check the answer, pause the video and take the screenshot of it. Okay, now the next question, this is question number 6. ठीक है, next question number 7. बेटा कहीं कहीं पे इसको दूसरे फॉर्मेट से भी किया होगा, सो डोंट बी कंफ्यूज. मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है x को cosec थीटा, कहीं पे इसको sec थीटा रिप्लेस किया होगा तो sec थीटा रिप्लेस करने पे कुछ और आया होगा. आई विल शो यू. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ़ यू आर रिप्लेसिंग x विद sec थीटा, ठीक है, सो व्हाट विल बी द चेंजेस, व्हाट आंसर में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे. इफ़ यू आर रिप्लेसिंग x विद sec थीटा, देन सी हियर दिस विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन रूट x square minus 1 means sorry sec square theta minus 1. This will be tan inverse 1 upon sec square theta minus 1 is tan square theta, and if you are taking tan square theta outside the bracket, then we will get tan theta. Okay, I am writing here sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Okay, so this will be tan inverse 1 upon tan theta, that is cot theta. Now tan and cot cancel तो होंगे नहीं है, so there is a property tan inverse, we can replace cot theta by tan 90 minus theta, that is tan pi by 2 minus theta. Now see pi by 2 minus theta, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या ये tan inverse की रेंज में है? Yes it is, because the range of tan inverse is from open interval pi minus pi by 2 to pi by 2 including 0. ठीक है, दिस इज द रेंज, सॉरी नॉट इंक्लूडिंग 0, केवल इतना ही होता है, ये आपकी रेंज है tan इनवर्स की. एंड यू कैन चेक पाई बाय 2 माइनस थीटा 90 से थोड़ा छोटा ही होगा जो भी एंगल होगा, क्योंकि हम 90 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इसी रेंज में वो आएगा. सो योर आंसर विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, सो वी गेट पाई बाय 2 माइनस थीटा. इफ x इज इक्वल टू sec थीटा, देन दिस विल इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x. सो यू कैन रिप्लेस हियर sec इनवर्स x. सो अगर आप पुट कर रहे हैं, इफ यू आर रिप्लेसिंग x विद sec थीटा, देन योर आंसर विल बी पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x, एंड इफ यू आर रिप्लेसिंग x विद cosec थीटा, देन योर आंसर विल बी cosec इनवर्स x. सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट. ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, रेस्ट वी विल डिस्कस इन गूगल मीट. ठीक है, टुमारो आई विल टेक द गूगल मीट क्लास. इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड द क्लास. Presence is mandatory because I will finish the whole exercise 2.2 in that particular class. Okay, so question number 7, tan inverse root 1 minus cos x upon 1 plus cos x, root 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Okay, where x is belongs to 0 to pi, है ना, x belongs to 0 to pi. Now see beta, again we have to think about that particular issue which I told you earlier, that ऐसे questions में we have some trigonometric inverse. ठीक है, कोई भी trigonometric inverse आपको दिया होगा बाहर से, यहाँ पे tan inverse है और मोस्टली क्वेश्चन में tan inverse ही होगा.
Now we have to think what can we do for the argument, so that we can change the argument in terms of tan. Whatever the inverse part has been given outside the bracket, we have to change the inner part in the same format. अगर tan inverse है तो tan में ही convert करना पड़ेगा, तभी हम उसको eliminate कर पाएंगे. Are you getting my point? So 1 minus cos theta upon 1 plus cos 1 minus cos x upon 1 plus cos x we have given as an argument. We know the formula of cos 2x. Basically two formula are executing here, ठीक है. Mainly the one is twice cos square x minus 1 and the another one is 1 minus 2 times sin square x. This is the formula for cos 2x, and here we have given the angle as x. So we will modify it like twice cos square x by 2 minus 1 and 1 minus twice sin square x by 2. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. ठीक है, यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ x हुआ, यहाँ x है तो यहाँ x by 2 हो जाएगा. नाउ सी हियर, दिस विल बी tan इनवर्स रूट 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर x by 2 minus 1. So tan inverse root, now see 1 minus 1 cancel out. In numerator we get twice sin square x by 2, and in denominator 1 minus 2 1 plus है ना, ये 1 cancel out. So we get in denominator we get twice cos square x by 2. So 2 and 2 will be cancel out. Sin square x by 2 upon cos square x by 2 means tan square x by 2. So this will be tan inverse root tan x by 2, okay, tan square x by 2. Now taking this tan square x by 2 outside the bracket, outside the root actually, so we get here tan inverse tan x by 2, and tan inverse tan x by 2 is equal to x by 2. Okay, now see, this is your simplest form. ठीक है ना, x by 2 आ गया आपका, क्योंकि इसी में आंसर आना भी था. So we have to change this one. ये जो क्वेश्चन दिया था हमें एक्चुअली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते होते यही फॉर्मेट देगा. वाई? बिकॉज वी नो द फार्मूला tan इनवर्स tan थीटा will be equal to theta if theta is existing within the range of tan inverse and which is from minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है कि आपका x क्या है, 0 से पाई के बीच में है, और हमारा एंगल क्या था, x by 2. सो सी हियर, if x is lying within the range 0 to pi, and I can also write it, क्योंकि ओपन इंटरवल है, सो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसे. ठीक है, सॉरी पाई है ना, पाई, बट वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ x by 2. सो डिवाइड द होल इनइक्वालिटी बाई 1 by 2. सो दिस विल बी 0 by 2, दिस विल बी x by 2, एंड दिस विल बी पाई by 2. है ना, प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना लीनियर इनइक्वालिटी की. इफ यू आर डिवाइडिंग विद द सेम पॉजिटिव नंबर द होल इनइक्वालिटी, देन देयर इज नो एनी चेंजेस इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, 2 इज ग्रेटर देन 1. अब मैं दोनों को सेम अमाउंट 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 by 2. So like that, if you are dividing by 2 the whole inequality, then this will gives you 0 by 2, that is 0, x by 2 and pi by 2. तो देख लो यहाँ पे x by 2 आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, मीन्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, और हमें किसके बीच में चाहिए था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि हमारा जो एंगल है वो इसकी रेंज में आ रहा है. दैट्स वाई tan इनवर्स tan x by 2 विल बी इक्वल टू x by 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप यू लाइक द वीडियो. ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. मीट यू इन गूगल मीट. ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.